हमको सभी से कर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के निखरेम के, सधर्म के सत्कर्म के, होती है झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करण को दास की, पर नहीं हो जार की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो समय से ईश्वर, हो राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति वीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रख खंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं करके जुदा, इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे कम रहे। हेलो हेलो मेरा ही ना सौरभ ठीक है स्टार्ट यस करें सर what we are discussing a overall what we are discussing. Good afternoon everyone. I am Manish Kumar along with my co-speaker Arpit Ladda or Arjav Jain. We are today discussing the topic composition scheme. So I have prepared this PPT in 5 parts. First part is introduction to the GST composition scheme, a simplified tax mechanism for small dealers. Why the composition scheme exists? So basically क्या होता है, रेगुलर जीएसटी जो भी उसके कंप्लायंस में होता है कि अगर आपने चेक करा हो तो कि हर महीने अपनी 2 से 3 रिटर्न जाती है, GSTR1 GSTR3 भी। और जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं फिर स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास इतनी मैन पावर, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और ये सब नहीं होता। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करा। व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम? अ लीगल एग्रीमेंट टू पे अ स्मॉल फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस टर्नओवर एज टैक्स इन ल्यू ऑफ रेगुलर हायर रेट टैक्स रेट्स। इन ल्यू का मतलब बेसिकली ये है कि हायर टैक्स रेट ना देने की बजाय अपन ओवरऑल ग्रॉस टर्नओवर पे एक स्मॉलर रेट से टैक्स पे करेंगे। पूरी कंपोजिशन स्कीम का एक की रूल हमेशा याद रखना कि टैक्स पेयर जो भी होगा कंपोजिशन स्कीम में वो आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। ये पूरी स्कीम का एक की रूल है। तो ये एक बार के लिए क्विक कंपैरिजन है कि रेगुलर जीएसटी और कंपोजिशन स्कीम में क्या डिफरेंस है। Yes or no? Yes, sir. I think just to start off, before we move into the session, let me so I think just to give a brief background, good afternoon, everyone.
So GST is now nearly a decade-old law, and yet, if we speak to any practitioner on ground, the honest answer is that it is still very much a work in progress, and the law is being interpreted, contested, clarified, and in some cases corrected almost on a daily basis. So let's suppose your client calls you and say that, the department has denied my ITC because my supplier didn't file the returns. Is that fair? Or I received a notice but never saw it on the portal. So what should I do now? Or simply should I opt for the composition scheme or not? Or I file late, how much interest or penalty do I need to pay? So these are not examination questions, these are real life situations. And today's session is basically designed to help you navigate exactly these kind of situations. So we'll be working on three different ICI publications, three handbooks that together cover very wide and very practical range of GST topics. First one is significant judicial and advanced rulings under GST. And in these 9 years of GST, multiple cases have been fought before various high courts and Supreme Court because tribunal is still not functional in completeness. And because the law, however, well drafted, cannot anticipate every situation. So this handbook basically captures the most important of those rulings organized on a topic wise basis for easy reference. As students, you might wonder that why we study case laws. So in your exams, case laws may fetch you marks, but in your professional life, case laws wins arguments when you're drafting a reply to a show cause notice, or maybe advising a client on whether to file an appeal or not. Knowing these court precedents gives you a decisive advantage, and the rulings cover four key areas, which is part of this handbook. So how is supply defined? What falls outside its scope of supply? When ITC can be claimed, and what protection a buyer has when their supplier defaults? How refund claims works? Uh, what the department can and cannot do to block the ITC or the refund claims, and how assessment, search, and enforcement proceedings are supposed to be conducted. Second one is related to composition scheme under GST. So this is relevant especially for, or while advising small businesses. So who is eligible for composition scheme? What is the turnover threshold? How it is calculated? What happens if your client crosses it during the year? Right? What are the trade-offs about input tax credit while adopting composition scheme? What does it mean for your clients, customers, because they won't be able to claim ITC, right, on the purchases from a composition dealer. So these are the practical questions which this handbook addresses. And the third and the last one is the most important and critical one, which is interest, late fees, and penalties under GST. So in case your client misses the filing of GSTR 3B, how much late fees do they owe? Is there any waiver? Whether interest applies, from which date and what amount? Can the department impose penalties? Right? So these are the first questions any client with a compliance lapse will ask you. And you need precise answers. The interest provision under section 50 has been heavily litigated in past. The late fee structure has been revised multiple times. There has been a amnesty scheme also in past, and the penalty provisions directly impacts your client's liability. So understanding all these topics, I won't say it's an optional part, but a basic foundational thing. So with this context, I think I'll now request the speakers to take up all these individual topics and we can discuss accordingly. So we can start, sir. I think the first topic is composition scheme. So we need to reduce the volume. What I said, one was suppose he is speaking to the secretary. बोल रहे हैं ये मैसेज कर तेरा वो माइक ऑन है ना माइक तेरा ऑफ है ऑन है ना हेलो हेलो am I audible? Yes.
So as we discussed कि कंपोजिशन स्कीम की नीड क्यों थी और फिर उसमें क्या प्रॉब्लम्स, उससे पहले क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिर उसके कैसे कंपोजिशन स्कीम उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के रूप में लाया गया. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द डेफिनेशन of composition scheme, a legal agreement to pay a small fixed percentage of gross turnover as tax in lieu of regular higher tax rates. In lieu of means कि अपन हायर टैक्स रेट की बजाय एक ग्रॉस टर्नओवर पे एक स्मॉलर रेट से टैक्स पे करेंगे. और जैसा कि मैंने पहले बताया, की रूल कंपोजिशन स्कीम का यही है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा जो भी कंपोजिशन टैक्स पेयर है. सो देयर इज अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन रेगुलर जीएसटी एंड कंपोजिशन स्कीम. रेगुलर जीएसटी में आपके पास बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है टैक्स ऑन टैक्स पे, मंथली रिटर्न्स होती है, फुल आईटीसी आपको मिलता है और डिटेल रिकॉर्ड कीपिंग इज मैंडेटरी. कंपोजिशन स्कीम में फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर जाता है, क्वार्टरली पेमेंट होता है, कोई आईटीसी अलाउड नहीं होता और मिनिमल पेपर वर्क होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मेजर बेनिफिट फॉर स्मॉल बिजनेस. सिंपल कैलकुलेशन हो गई इसमें, फ्यूअर रिटर्न्स, आपको बस एनुअल एक ही रिटर्न जाती है कंपोजिशन स्कीम में जीएसटीआर 4 और बहुत लेस पेपर वर्क होता है. जब इनिशियली गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम लाई थी तो इनिशियली स्कीम सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड रेस्टोरेंट के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी. लेटर ऑन गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट को ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारे स्मॉल सर्विस सप्लायर और प्रोवाइडर्स भी ऐसे हैं जिनको कंपोजिशन स्कीम की नीड है. सो एज ऑफ नाउ वी हैव टू स्कीम्स, one for supplier of goods and restaurant and another one for service providers. Key forms of composition taxpayer, form GSTR registration 1 and CMP 2. REG 01 is for if कोई भी न्यूली रजिस्ट्रेशन करा रहा है अपना, तभी वो जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है उसमें ही वो अपने आप को एज अ कंपोजिशन टैक्सपेयर बता के कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. CMP 02 में अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्सपेयर हो इन रेगुलर स्कीम, देन आप जब भी कंपोजिशन स्कीम में आते हो तब CMP 02 यूज होता है और ये आपको बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बताना पड़ता है. बेसिकली कि 31 मार्च से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट इन करना है. साल में आपको एक ही बार ऑप्शन मिलता है, वो 31 मार्च से पहले. और टैक्स पेमेंट के लिए इसमें फॉर्म CMP 08 यूज होता है, क्वार्टरली बेसिस ऑन और बिफोर 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द रिलेवेंट क्वार्टर. एक एनुअल रिटर्न जाती है कंपोजिशन टैक्स पेयर की. द एनुअल रिटर्न ऑफ फॉर कंपोजिशन टैक्स पेयर बिफोर 30th day of June following the end of financial year, which is form GSTR 4. So there is a question for online participant, what is the specific return for designated for a composition taxpayer to file? Aditya Bansal. Option A form GSTR 1, option B form GSTR 3B, option C form GSTR 4, or D form GSTR 9A. The correct answer is the option C, form GSTR 4. Correct. GSTR? 4. So next part of presentation is, मैंने आपको पहले बताया था कि कंपोजिशन स्कीम के दो पार्ट है. वन इज फॉर गुड्स सप्लायर एंड रेस्टोरेंट एंड वन फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स. तो फर्स्ट हम गुड्स और रेस्टोरेंट वाली पे डिस्कस करेंगे, देन वी कवर सर्विस वाला पार्ट. सो इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट. सो लेट्स मूव इन. इसमें वापस से वही चीज आ रही है कि इन ल्यू ऑफ नॉर्मल टैक्स आपको बेसिकली जो भी रेगुलर हायर टैक्स रेट 12% 18%, उनकी बजाय एक बेसिक ओवरऑल ग्रॉस टर्नओवर पे एक जैसे मैन्युफैक्चरर है, रेस्टोरेंट डीलर है या फिर ट्रेडर है, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग रेट से, और वो एक स्मॉलर रेट से जाता है. एक पर इसमें कैच ये है कि अगर आपकी जो भी रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी बनती है इनवर्ट सप्लाईज की, वो आपको पे करनी ही करनी पड़ेगी और वो हायर रेट से ही पे होगी. वो मेरे आउटवर्ड सप्लाई के पार्ट में नहीं आती. दैट्स व्हाई. So turnover threshold limit for composition scheme in case of supplier of goods and restaurant, the general category state के लिए है 1.5 crore aggregate turnover in the preceding financial year must not exceed this limit. मतलब preceding financial year का मेरा turnover 150 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में ये लिमिट रिड्यूस होकर 75 लाख पे. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अपने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड है. The value of supply of exempt services by way of extending deposit, loan or advances in so far as consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into accounting for determining the eligibility of composition scheme. Basically ये लाइन यही बोल रही है कि जब भी आप
एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं अपन एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो उसमें अपन इंटरेस्ट और डिस्काउंट को एक तरह से इग्नोर करते हैं क्योंकि ये अपने इसमें इसका पार्ट नहीं बनता। और जो ये लिमिट चेक होती है वो ऑल ओवर पैन वाइज चेक होती है। अगर किसी एंटिटी के 4-5 स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो ओवरऑल उसके पैन के बेसिस पे उसका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ और इन केस 75 लाख क्रॉस नहीं करना चाहिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो नेक्स्ट इज आई हैव अ केस स्टडी फॉर दिस, द एग्जेम्प्ट गुड रूल। सिनेरियो इसमें ये है कि मिस्टर ए सोल्ड ओनली टैक्स एग्जेम्प्ट फ्रूट last year, so he was not legally required to have a GST registration. This year he decided to start selling taxable fruit, jam and wants to opt for composition scheme. तो यहाँ पे अपने पास दो सिचुएशन है कि लास्ट ईयर में उसका टोटल सेल एग्जेम्प्ट थी और वो थी अराउंड 120 lakhs। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि क्योंकि उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर एग्जेम्प्ट टर्नओवर था और वो अंडर 150 लाख लिमिट था, ही कैन ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम। तो कई बार यहाँ पे डाउट ये हो सकता है कि मैं तो लास्ट ईयर तक रजिस्टर्ड ही नहीं था, इस बार मैं जब नया ही रजिस्टर कर रहा हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा पुराने साल में क्या टर्नओवर था। अगर आप लास्ट ईयर रजिस्टर्ड नहीं थे, आपका एग्जेम्प्ट गुड्स में डील कर रहे थे, स्टिल आपके लास्ट ईयर का प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देखा जाएगा। जैसे कि सिचुएशन 2 में आप देखेंगे कि लास्ट ईयर हिज टोटल सेल्स ऑफ एग्जेम्प्ट फ्रूट्स वर 160 लाख, result he will be not eligible this year even though he wasn't registered for last year. This past exempt sale crossed the limit of 150 lakh threshold. He must register as a normal taxpayer this year. So in case जब initially ये था अपना कंपोजिशन स्कीम केस ऑफ गुड्स, इनिशियली ये था कि अगर जो गुड सप्लाई कर रहा है अगर वो कुछ भी सर्विस देता तो स्कीम से डिस्क्वालीफाई हो जाता था। इसकी ये प्रॉब्लम आई थी, तो इस चीज के लिए सॉल्यूशन लाया कि एक स्पेसिफाइड लिमिट तक गुड सप्लायर सर्विसेज भी दे सकता है और वो लिमिट ये है कि नॉट मोर देन 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन प्रीवियस ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो बेसिकली मेरे जिस भी स्टेट का मेरा रजिस्ट्रेशन है उसके लास्ट ईयर के टर्नओवर से 10% से ज्यादा या 10% या फिर 5 लाख से ज्यादा जो भी हायर अमाउंट है उससे ज्यादा की मैं सर्विसेज नहीं कर सकता, उसके अंडर में मैं उतने पार्ट की सर्विस भी दे सकता हूं अलॉन्ग विद गुड्स। सो इस पे भी मैंने केस स्टडी बनाई है कि मिस्टर गुप्ता है, लोकेशन उसकी मध्य प्रदेश है, तो इसमें अपना वैसे तो 150 लगेगा पर इसमें अपनी कवर नहीं होगी, ठीक है। लास्ट ईयर टर्नओवर इज 55 लाख, तो इसके लिए अलाउड सर्विस लिमिट बनेगी 5.5 लाख विच इज 10% ऑफ 55 लाख एंड 5 लाख, तो 5.5 और 5 में हायर हो गया 5.5। तो करंट ईयर में मिस्टर गुप्ता जो है वो 5.5 लाख तक की सर्विसेज दे सकता है अलॉन्ग विद हिज गुड सर्विसेज। सो अब मैंने जब आगे बताया था कि इंटरेस्ट पार्ट को अपन इग्नोर करते हैं, तो करंट ईयर की सेल्स में अपन देखेंगे कि गुड्स सोल्ड उसने 60 लाख की करी है, सर्विस प्रोवाइडेड 3 लाख की करी है एंड इंटरेस्ट 2 लाख, तो अपन उसको बिल्कुल इग्नोर करेंगे क्योंकि ये अपना उसका टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता। मिस्टर गुप्ता सर्विस turnover of 3 lakh is safely below his allowed service limit of 5.5 lakh. Therefore, he remains eligible for the composition scheme this year. Who is strictly ineligible? जो भी नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करते हैं, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड सप्लाई करते हो तो भी आप कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। या फिर आप नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर हो ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको, स्पेसिफिक बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है नॉट ट्रेडर। इट मीन्स कि अगर अपन कई बार मान लो एग्जांपल के लिए अगर मैं कहीं से आइसक्रीम लेने जाता हूँ तो वो कंपोजिशन स्कीम से इनएलिजिबल नहीं है क्योंकि ही इज अ ट्रेडर। इसके लिए मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है इन सारी गुड्स के लिए। और सर्विस ईसीओ सप्लायर सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर where TCS is collected, the restriction on supplying goods such as ECO was removed starting October 1, 2023. So basically ये ऐसा था कि अक्टूबर 1, 2023 से पहले अगर आप ECO से कुछ भी सप्लाई करते थे और ECO आपका TCS कलेक्ट करता था तो भी आप इनएलिजिबल हो जाते थे। इसमें लेटर ऑन अमेंडमेंट करके ये लाया गया है कि आप गुड्स सप्लाई कर सकते हो, बट इन केस अगर आप ECO के थ्रू सर्विस सप्लाई करते हो और उसमें ECO आपका TCS डिडक्ट करता है तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई होते हो और गुड्स आपकी स्टिल एलिजिबल वाली कैटेगरी में रहती है। एप्लीकेबल टैक्स रेट इसमें अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो इफेक्टिवली 1%, 0.5 CGST एंड 0.5 SGST है। रेस्टोरेंट के केस में 2.5%, 2.5% C और S में, और ट्रेडर्स के केस में 0.5 अगेन। बट यहाँ पे भी एक चीज है कि जब भी आप इन टैक्स रेट को अप्लाई करोगे
तो मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट के केस में ये जो टैक्स रेट है वो टोटल टर्नओवर इन द स्टेट पे एप्लीकेबल होगी, बट इन केस ऑफ ट्रेडर ये सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर पे एप्लीकेबल होगी। इसके लिए अपन ने आगे एक एग्जांपल ले रखा है। तो फर्स्टली टर्नओवर इन स्टेट क्या है? टर्नओवर इन स्टेट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies and exports made with a specific state or union territory excluding GST rate taxes। वैसे तो अगर आप देखोगे कि इसमें ये एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो काइंड ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई हो जाती है, तो इनएलिजिबल हो जाना चाहिए, बट ये डेफिनेशन है टर्नओवर इन स्टेट की, तो जब टैक्स पे करने की बारी आती है तो इसमें वो कवर होती है। तो यहाँ पे ट्रेडर रूल अपना ये हो गया कि ट्रेडर के रूल मैंने बताया आपको पहले भी कि 1% ऑफ टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल टर्नओवर इन द स्टेट। सो यहाँ पे अपना केस स्टडी ये कह रहा है कि प्रीवियस ईयर का इस टर्नओवर वाज 55 लाख, सो ही इज एलिजिबल फॉर करंट ईयर। करंट ईयर सेल्स उसकी 60 लाख हो गई, टैक्सेबल सर्विस उसकी 3 लाख हो गई और इंटरेस्ट इनकम उसकी 2 लाख हो गई। जो इंटरेस्ट इनकम है वो अपनी काइंड ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस में आ जाती है और इसीलिए वो इग्नोर हो जाती है। तो मेरा टैक्सेबल टर्नओवर इन द स्टेट बना 63 लाख और उस पर मैं ट्रेडर हूँ, इसलिए मेरा 1% इज इक्वल टू 63,000 बनेगा। स्ट्रिक्ट इनवॉइसिंग रूल, अगर आप कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे हो तो यू कैन नॉट चार्ज जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स ऑन सेल्स, और आपको कंपोजिशन जिसने ले रखी है स्कीम वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, उसे बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना पड़ेगा। एंड उसने अपने टॉप ऑफ बिल पे मस्टली उसे लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। इसके एडिशनली भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन प्रोमिनेंटली ऑन ऑल साइन बोर्ड्स लिखना पड़ेगा। एडिशनल प्लेसेस पे भी ये रिक्वायरमेंट सेम एप्लीकेबल होगी और साइन बोर्ड्स की विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। सो देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। As of April 2019, what is the aggregate turnover threshold limit in the preceding financial year of opting into composition scheme in the state that are not special category state? Example के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स के लिए प्रीवियस ईयर की क्या लिमिट लगेगी? ऑप्शन ए इज 50 लाख, ऑप्शन बी 75 लाख, ऑप्शन सी इज 100 लाख एंड ऑप्शन डी इज 150 लाख। Kusi Jain. अनम्यूट करो ना, मेरी आवाज नहीं आ रही, उसमें नहीं आ रही, बोलो। Kusi Jain. Sir, answer is D, 150 lakhs. करेक्ट आंसर। तो अभी अपन ने जो डिस्कस करा वो था कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ गुड्स सप्लायर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट वन इज जीएसटी कंपोजिशन स्कीम इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड मिक्स सप्लायर, डिकोडिंग सेक्शन 10(2)(a ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो इसके लिए रूल क्या है कि द स्कीम इज स्ट्रिक्टली फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट इन द स्टैंडर्ड कंपोजिशन स्कीम। जो रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स के और रेस्टोरेंट वाले में ऑप्ट इन नहीं कर पा रहा, ये उनके लिए अवेलेबल है अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2). इसके टारगेट ऑडियंस हो गए स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर, फ्रीलांसर, ट्यूटर कंसल्टेंट्स एंड मिक्स सप्लायर जो गुड्स और सर्विसेज बोथ करते हैं और स्टिल उनकी एक लिमिट से अपर में जाती है सर्विसेज। एलिजिबिलिटी के लिए इसके आपको वही जो नॉर्मल कंडीशन हो गई वो करनी पड़ेगी और आपकी एलिजिबल गुड्स होनी चाहिए, ये तो बहुत बेसिक कंडीशन है। सर्विसेज के केस में एक ही थ्रेशोल्ड लिमिट है अपनी 50 लाख और एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट है ये। इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है कि आपकी जो लिमिट है वो ऑल इंडिया पैन वाइज कंसिडर होगी जब भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे अपन। स्ट्रिक्ट कंडीशन वापस इसमें लगभग सिमिलर सी स्कीम है, तो कंडीशन भी कुछ सिमिलर सी है कि आपको कोई भी इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करनी है। इन केस अगर आप कंपोजिशन स्कीम 10(2)(a) में हो, नो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, यू कैन नॉट सप्लाई आइटम्स अवेलेबल लाइक हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड सो ऑन। ई कॉमर्स रेस्ट्रिक्शन भी इसमें भी सेम रहेगी। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और वहां पे आपका ईसीओ टीसीएस कलेक्ट करता है तो भी आप इनएलिजिबल हो जाओगे इस चीज के लिए, और कोई भी कैजुअल और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। एंड द लास्ट वन इज नोटिफाइड मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, एडिटेड वाटर, टोबैको एंड स्पेसिफाइड बिल्डिंग ब्रिक्स इज ऑल्सो इनएलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इस स्कीम में टैक्स रेट फ्लैट है, 3% CGST and 3% SGST on state or UT turnover. Key point applies to all outward supply, both taxable and exempt, excluding interest on deposit.
अगर इंटरेस्ट और डिपॉजिट के अलावा कोई भी दूसरी एग्जाम सर्विसेज है तो भी ये उस पर एप्लीकेबल होगी इक्वली। एग्जाम्पल के लिए एक मिक्स सप्लायर है मिस्टर ए, उसकी 15 लाख की टैक्सेबल गुड्स की सर्विसेज करता है वो, और 10 लाख की एग्जाम सर्विस करता है। तो अगर इसमें आप रेशियो देखोगे तो 15 और 10 एक मेजर अमाउंट है, तो ये अगर इसका प्रीवियस ईयर कुछ भी हो तो ये 10% की लिमिट में नहीं आ पाएगा। डेट्स वाई इसने स्कीम 10(2)A में ऑप्ट करी। तो इसका टोटल टर्नओवर पड़ रहा है 25 लाख टोटल। और तो यहाँ पे जैसा कि बताया कि जो टैक्स रेट है वो टोटल टर्नओवर पे लगेगी। तो 6% ऑफ 25 लैक्स गोज टू 1.5 लाख टैक्स लाइबिलिटी। ये उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी इस स्कीम में। वापस रूल यही लगेगा कि इफ वन एंटिटी ऑप्ट्स इन ऑल अदर रजिस्ट्रेशन अंडर द एग्जैक्ट सेम पेन मस्ट ऑल्सो ऑप्ट इन 6% स्कीम। आप एक स्टेट में 6% से टैक्स दे रहे हो और एक स्टेट में आप 12%, 18%, तो दिस इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस स्कीम। इनवॉइसिंग रिक्वायरमेंट के लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं कर सकते, कस्टमर से आप कोई भी टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते, और इसके केस में भी आपको बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना पड़ेगा। यू कैन नॉट इशू द टैक्स इनवॉइस। मैंडेटरी डिस्प्ले इस ओके, मैंडेटरी डिस्प्ले रिक्वायरमेंट्स इसमें भी सेम है। बिल्स एंड इनवॉइसेस पे आपके मस्ट क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो और आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। और आपके शॉप मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी ये साइन बोर्ड होने चाहिए कि सेम डिक्लेरेशन मस्ट अपीयर ऑन फिजिकल प्रीमाइसेस एंड स्टोर फ्रंट्स दैट यू आर एन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। केस सिनेरियो इसके केस में है कि न्यू बिजनेस अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो उसके रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी आने से पहले उसका टर्नओवर 19 लाख था, और उसके बाद में अगर आप 50 लाख की लिमिट लेते हैं तो उसके बाद में रिमेनिंग टर्नओवर बढ़ता है 31 लाख। तो जब भी अपन एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट चेक करेंगे तो अपन जो रजिस्ट्रेशन ड्यू होने से पहले का टर्नओवर था उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली मेरा ओवरऑल जो मेरे रजिस्ट्रेशन होने से पहले का टर्नओवर है और उसके बाद में जो मैं करूंगा वो 50 लाख से अगर क्रॉस होता है तो फिर मैं इसके लिए इनएलिजिबल हो जाऊंगा, अदरवाइज मैं इस चीज के लिए एलिजिबल हूँ। पर जो मैं टैक्स पे करूंगा इसमें, वो जब मैं रजिस्टर्ड पर्सन हुआ उसके बाद में ही मेरी टैक्स लाइबिलिटी उस पर बनेगी। जो उससे पहले का मेरा जो भी टर्नओवर है उस पर मैं कोई भी टैक्स पे नहीं करूंगा। केस 2 में आगे अगर मिक्स सप्लायर है तो इसमें वही जो आगे अपने केस सिनेरियो लिया था कि उसमें एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल गुड्स दोनों पे फ्लैट पे 6% लगेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एग्जेम्प्ट सर्विसेज इररेस्पेक्टिव ऑफ वो जो इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन और डिपॉजिट जो मैं पहले बता चुका वो कंप्लीटली इग्नोर होती है इस कंपोजिशन स्कीम के केस में। केस 3 में अगर आपके मल्टीपल स्टेट ऑपरेशन है तो राजस्थान ब्रांच में अगर आपने कंपोजिशन ले रखा है तो आपकी दूसरी स्टेट की ब्रांचेस को भी सेम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, which is the total rate of composition tax payable by a service provider opting for the scheme under section 10(2)A? Option A 1%, option B 2.5%, option C 5%, and option D is 6%. Manas and Yashasvi. Sir, answer is option D, 6%. Correct answer. So the next topic is GST registration. Who is liable? Decoding section 22, 23 and 24 of the CGST Act. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही कोर कंसेप्ट है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर एंड द स्टेट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाता है। लायबिलिटी टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन टू मेन फैक्टर, योर एग्रीगेट टर्नओवर एंड द स्टेट। Yes, Sure. Yeah. So I think composition scheme more or less should be clear because it is as good as you are dealing with someone who is a terminal customer, because if you see the input tax credit is also blocked for the trader or someone who is registered under composition scheme, as well as his recipient is also not eligible for ITC, right? And the rate of tax, if we'll compare for goods in normal course, it will be 5 or 18 or 28%. 12% bracket is now more or less done away with. And for services, it is 18%, right? Compared to composition scheme, your goods will be treated at 1% and services will be 6%. So this scheme is precisely for small taxpayers who are not having, capacity to, internally manage all their compliances.
right? And the turnover is also not that significant. So for all those businesses, definitely they can go for composition scheme, but this is having a turnover limit, so you cannot go beyond that particular threshold. And also input tax credit is something which is not available. So someone who is going under composition scheme is majorly who is dealing into MRP based goods or where value addition is significantly low, right? So that's all. Next topic is registration in under GST. The core concept behind this key liability to obtain GST registration is based on two main factors: your aggregate turnover and the state or UT from where you make taxable supplies. Key points is non-centralized registration. You must register in every state where you make taxable supplies. Aggregate turnover include all taxable, exempt, export, and interstate supplies under the same pane. GST taxes are excluded from aggregate turnover calculation. Threshold limit for registration is all state other than special category state for goods is 40 lakhs rupees. Threshold for goods and services means कि mixed supplier है तो उसके लिए 20 lakhs and threshold for service is 20 lakhs. अब अपने पास दो कैटेगरी ऑफ स्पेशल स्टेट्स है. वन में जिसमें कवर्ड है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड. इनके लिए गुड्स के लिए भी गुड्स एंड सर्विसेज के केस में और थ्रेशोल्ड ओनली सर्विसेज के केस में तीनों में 20 लाख की लिमिट रहेगी. एंड द थर्ड वन इज कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इनके केस में 10 lakhs फॉर गुड्स, 10 lakhs फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड 10 lakhs इज ऑल्सो फॉर सर्विसेज ओनली. द इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्पशन, जैसा कि अपन ने इस पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरेस्ट की इनकम होती है वो ये एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कैलकुलेशन करने के लिए. वेट अ मिनट, ठीक है. जैसे कि वापस चलता है कि आप फर्स्ट में देख रहे हो कि ऑल स्टेट अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उसमें गुड्स के लिए लिमिट लिखी हुई 40 lakhs एंड थ्रेशोल्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए लिखी हुई 20 lakhs. तो इन केस अगर आपकी कोई भी इंटरेस्ट इनकम आती है तो वो सर्विसेज का पार्ट बनती है. तो उसमें एक एक्सेप्शन दी गई है टैक्स पेयर को कि अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम बाय फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, तो ये सिर्फ मेरली इस इनकम की वजह से आप एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन जाते या फिर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन जाते. तो इसकी वजह से आपकी लिमिट रिड्यूस होकर 20 लाख पे नहीं आएगी, आपकी लिमिट स्टिल 40 लाख पे रहेगी. सो अर्निंग इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन डिपॉजिट और लोन डज नॉट डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम द 40 लाख गुड्स लिमिट. एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए की सेल्स गारमेंट गुड्स वर्थ 38 लाख, एडिशनली उसकी इनकम थी INR 1.5 लाख इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट. तो इन केस अगर कोई बोलता है कि या तो आप सर्विसेज में भी डील कर रहे हो तो आपकी लिमिट रिड्यूस होकर 20 लाख हो जानी चाहिए. बट हियर वी हैव एन एक्सेप्शन कि मैं इंटरेस्ट की इनकम को उसमें इंक्लूड नहीं करता, तो मेरे लिए स्टिल लिमिट 40 लाख ही रहेगी और मेरा टोटल टर्नओवर 39.5 लाख है. तो स्टिल जो भी मिस्टर ए है उसको अभी तक रजिस्ट्रेशन कराने की नीड नहीं है क्योंकि उसके लिए लिमिट स्टिल 40 लाख रुपीज है. हु कैन नॉट क्लेम 40 लाख एग्जम्पशन? मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेसिफिक नोटिफाइड गुड्स मस्ट रजिस्टर रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर. अगर आप आइसक्रीम एंड एडिबल ऑयल्स में डील करते हो तो आपकी चाहे कितनी भी सर्विस हो, 1 रुपए, 2 रुपए, लाख रुपए, आपको स्टिल उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा. आप प्रोडक्शन ऑफ पान मसाला में हो, बेटर लीफ प्रिपरेशन में हो, टोबैको प्रोडक्ट्स में हो या फिर बिल्डिंग ब्रिक्स और इन सब कैटेगरी में अगर आप डील करते हो तो इररेस्पेक्टिव ऑफ लिमिट आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24. कंप्लीट लिस्ट है यहाँ पे. Person making any interested taxable supply. If you are supplying one state to another state, you have to mandatory registration for GST. ध्यान में लगा हुआ है क्या? हाँ? क्या डिस्कस कर रहे हैं 5 मिनट के लिए? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. उससे पहले बता क्या डिस्कस. Next one is casual taxable person making taxable supplies. Person required to pay tax under RCM. अगर आप person required to pay tax under section 95 specified services, अगर आप EC हो तो भी आपको mandatory tax GST registration लेना है. नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स को भी मैंडेटरी है. पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51, उन टैक्सेबल पर्सन्स को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है.
person making taxable supplies on behalf of other taxable person as agent or otherwise input service distributor. अगर आपका कोई भी ISD का registration आपने ISD के केस में आप डील करते हो तो भी आपको registration mandatory होता है. Person supplying goods or services through e-commerce operator required to collect tax TCS under section 52. Every e-commerce operator required to collect tax at source under section 52. Every person supplying OIDR services from outside India to person in India other than registered person. And the next one, last one is every person supplying online money gaming from outside India to a person in India. ये So I have one specific question here. So what about exporter of service? So you have seen many people who are purely providing services in the nature of exports like outsourcing accounting services or software services provided by individual, right? So if I'm sitting in India and I'm providing services to one of my client in US, right? One of my client in US, right? Hello. Am I audible? Yes. Yes. Yeah, so I'm saying, let's suppose we take an example that a person is sitting in Jaipur and he's providing services to his client in US, right? And he's providing software services. He's an individual, he's just raising invoices to the client in US and the client is remitting funds against that invoice in India. Now, ideally, this is export of service, right? So whether in this case registration will be mandatory or non-mandatory? Anyone? Yes. Based on your knowledge and expertise. Exactly. एक्सपोर्ट को अपन एज ए इंटरस्टेट टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई काउंट करते हैं तो क्या हो गया? Correct. So exports are yeah. So exports Am I are audible, sir? yeah. Export is interstate supply. Also, if you'll see, export are zero rated supplies, right? So there is a difference: exempt services and zero rated services. So exempt and zero rated are not at par. Zero rated is still taxable. Hello. हेलो Yes. सर मेरे अकॉर्डिंग So I'll just explain. There are 2-3 points. Obviously, one is the compliance point, plus one is legal framework. So export is definitely covered under interstate supplies as per the definition. So there is mandatory registration requirement. Second is it is zero rated, right? Now, mandatory registration is not applicable in case of someone who is only providing exempted services. Export is zero rated, not an exempted one, right? So there is a difference between zero rated supplies and exempted. Exempted supplies are non-taxable and zero rated is taxable, but the rate of tax is zero or nil, right? So you cannot say that zero rated services are exempted services. So that is one point. Also, if you'll see the condition for export of services, it says that you need to file LUT also, which is letter of undertaking for taking benefit of zero rating. So on a procedural part also, even if you are providing services on a zero rated basis, export of services, then you have to file a LUT, right? And LUT is not, it is not possible to file LUT without registration. So if you link it technically on the legal aspect as well as procedural part, registration becomes mandatory for export of services. And we have seen many cases where individuals are providing services to people sitting outside India and they are just simply raising invoices and receiving money. And now the tax authorities are behind that, because even if you are providing services which are not liable to tax per se, but since you have not complied with the conditions like filing of LUT and all disclosures, so therefore this export related benefit is not available to you.
So this is a practical, situation right now, and there are many cases, or I would say inquiries going on in such cases. You can continue. यस सर। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे कि अगर आप कोई भी इन कैटेगरीज में फॉल करते हो तो आपका इवन ₹1 का भी टर्नओवर है तो यू हैव टू मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। हु इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन? जिसकी 100% एग्जेम्प्ट सप्लाई है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि एक्सपोर्ट के केस में वो एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है, वो टैक्सेबल सप्लाई है, बट उसकी रेट 0 है। तो एक्सपोर्ट के केस में अपन वैसे ही मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में आ गए, बट कौन रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्ट है? जिसकी 100% एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, person engaged exclusively in the supplying goods service that are wholly exempt or not liable to tax under CGST or SGST Act. Agriculturist, to the extent of supplying produce out of cultivation of land for agriculture purpose. And reverse charge supplier, person whose total outward supplies are taxed entirely on reverse charge basis and buyer pays the tax. Summary, if the government isn't getting tax from you specific output anyway, they save you the hassle of registering. The next is a question for the online participants. If a supplier is engaged exclusively in the supply of goods in state like Maharashtra, not a special category state, what is the threshold limit of aggregate turnover for obtaining mandatory GST registration? Option A is 10 lakhs, option B is 20, and option C 40 lakhs, option D is 75 lakhs. Full kit. Option C, 40 lakhs. Correct answer. The last part of my PPT is entering the composition scheme, intimation rules, and ITC reversal. Understanding Rule 3, Section 18 of the Seamless GST Compliance. तो कंपोजिशन स्कीम में एंटर होने के लिए 3 आपके पास पाथ थे। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको जब आप अपन रजिस्ट्रेशन आपके लिए अप्लाई करते हैं जीएसटी REG 1 में, तभी अपने पास पार्ट बी में ऑप्शन होता है कि यू कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। एंड टैक्स पेयर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको फाइल करना पड़ता है GST CMP 02 इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट बाय March 31st। एंड ये माइग्रेटेड टैक्स पेयर का केस तब था जब इन केस आप वैट और सर्विस में पहले से कुछ डील कर रहे थे, आप पहले से वहां पे टैक्सेबल पर्सन थे, देन आप जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो तो उसके लिए GST CMP 01 फॉर्म है। इसके केस में भी वापस वही पैन की कंडीशन सेम रहती है। 2 की रूल है वैसे तो, एक आईटीसी का और एक पैन का, कि आपको ओवरऑल पैन वाइज लिमिट चेक होती है और आपको आईटीसी नहीं मिलता। इफेक्टिव डेट्स क्या होगी कि जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन है, जिस डेट से उसका रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट ऑन योर रजिस्ट्रेशन डेट, आपकी जो डेट है वो जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उस डेट से स्टार्ट होगी। और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो जो कन्वर्ट करवाते हैं तो उनकी 1st ऑफ द न्यू फाइनेंशियल बेसिकली 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कंडीशन भी यही है कि आपको 31 मार्च से पहले आपको उसको CMP 02 में बताना पड़ेगा कि आपको स्कीम में ऑप्टेन करना है। तो इफ वी आर ऑप्टिंग इन कंपोजिशन स्कीम तो अपने को इनपुट को रिवर्स करना पड़ता है जो भी अपन ने क्लेम कर रखा होता है। तो बेसिकली ऑप्ट इन करने के लिए भी कुछ कॉस्ट लग रही है, विच इज कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। सेक्शन 18 ये बोलता है कि स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल टू कंपोजिशन स्कीम रिक्वायर रिवर्सिंग ITC on inventory goods. So what must be reversal? ITC on raw material, semi-finished goods, ITC on finished goods, and ITC on capital goods in stock. The consequences का ये होगा कि after payment any remaining balance in electronic credit ledger lapses to 0. Filing GST ITC 3, it is a kind of stock statement. आप जब भी GST composition scheme में आते हो आपको डिटेल फर्निश करनी पड़ती है विद इन 60 डे फ्रॉम फाइनेंशियल स्टार्ट। अगर आपके पास कोई भी मिसिंग इनवॉइसेस है तो उसका एस्टिमेशन लेना पड़ता है, रिवर्सल बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस, एंड यू हैव टू सर्टिफाई इट फ्रॉम एन चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन कॉस्ट अकाउंटेंट। कैपिटल गुड्स के रिवर्सल के केस में रूल 44 की कैलकुलेशंस कुछ इस प्रकार है कि जो भी कैपिटल गुड्स है उसकी एक फिक्स्ड लाइफ अज्यूम्ड है इसमें कि 5 ईयर के लिए उसकी लाइफ होगी, और इन केस 5 ईयर मीन 60 मंथ्स, और प्रो राटा बेसिस पे इसका ITC रिवर्सल होता है, और जो पार्शियल अमाउंट रह जाता है मंथ्स का वो इग्नोर करा जाता है और राउंडेड डाउन करा जाता है। इसके लिए अपने पास एक एग्जांपल है कि मैंने मशीन परचेज करी थी और मैं पहले नॉर्मल टैक्स पेयर में था,
अब मैं चाहता हूं कि मैं कंपोजिशन स्कीम में आ जाऊं, तो एज ऑफ नाउ मैंने एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर उस मशीन को 4 ईयर एंड 6 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स एंड 15 डेज के लिए यूज कर लिया है। जैसा कि रूल 44 कहता है कि आपके पास टोटल यूजफुल लाइफ उसकी 16 मंथ कंसिडर करी जाती है, तो मेरे यहाँ पे हो रहे 54 मंथ एंड 15 डेज। और तो अपने को जो पार्शियल अमाउंट होता है उसको इग्नोर करना होता है और राउंड डाउन करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 54 डेज का आईटीसी तो मुझे मिलेगा, एंड रिमेनिंग पोर्शन जो भी रहेगा 6 मंथ का आईटीसी वो मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा, विच इज कम्स टू 10,000 रुपीज। द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन अ टैक्स फॉर द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट और ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन लेना चाहे तो, when a taxpayer switches from the normal scheme to the composition scheme, they must reverse the input tax credit on capital goods. For this pro rata calculation, what is considered the useful life of the capital goods? Is it 3 years, 5 years, 7 years, or 10 years? बस बना लिया। highest one को हमें reason भी The answer is option B, 5 years. आवाज नहीं, रिपीट करोगे प्लीज? बढ़िया Option B. गिर गया सबसे सही। Option ठीक है, B. करेक्ट आंसर बी, ऑप्शन बी। थैंक यू गाइस, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। So I think reversal का जो logic है for input goods or capital goods, because as we have seen that in composition scheme you are not allowed ITC, right? So जिस दिन आप move कर रहे हैं, the day you are moving from regular scheme to composition scheme, so as on that date whatever input tax credit is there in your books of accounts and on the portal, that ITC has to be foregone. So while moving to composition scheme, that ITC, whatever it is there in your capital goods or your inputs, that has to be reversed, and specific rules are there that how that amount of ITC is to be arrived at. Right. So this computation is again very critical, and specific formulas are provided in the rules itself. You can move ahead for the next speaker. Good afternoon, everyone. Myself, Arpit Ladda. We will covering 3 chapters: time of supply, place of supply, and value of supply. वैसे तो ये तीनों चैप्टर ऐसे बेयर एक्ट के हिसाब से देखे तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, पर अपन ने वही प्रोविजन इस पीपीटी स्लाइड में लिए है जो कंपोजिशन टैक्स पेड से रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट विद टाइम ऑफ सप्लाई। वाई टाइम ऑफ सप्लाई मैटर? टाइम ऑफ सप्लाई अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों डिसाइड करना मैटर करता है? देयर आर फॉलोइंग रीजन फॉर लायबिलिटी कैलकुलेशन एक्यूरेसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबिलिटी, interest and penalty exposure matching with recipient books. Section 12, time of supply of goods. How to determine time of supply of goods? सेक्शन 12 के हिसाब से अपन गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे? इनवॉइस डेट, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31, एज पर सेक्शन 31 अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। डेट ऑन विच सप्लाई रिसीव पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर, कंसिडर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर अपने ये एक डाउट आता है कि टाइम डेट ऑन विच सप्लाई रिसीव पेमेंट, ये डेट कैसे डिसाइड करेंगी? तो जीएसटी लॉ ने क्लेरिफाई कर रखा है अपने को, डेट व्हेन पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट व्हेन पेमेंट इज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर, कंसिडर सप्लाई रिसीव पेमेंट। सेक्शन 31, टैक्स इनवॉइस। ए रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स मस्ट इश्यू ए टैक्स इनवॉइस एट द टाइम ऑफ रिमूवल और डिलीवरी ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ टैक्सेबल सर्विस, द invoice must be issued within the prescribed time. In continuous supply of goods or service, invoices are issued based on payment schedule or contract term. Time of supply for services.
ये इसमें दो पार्ट है। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज की अपन कैसे डिसाइड करेंगे? वेयर इनवॉइस हैज बीन इशूड एज पर सेक्शन 31, अगर इनवॉइस एज पर जो अपने टाइम लिमिट दे रखी थी सेक्शन 31 में उसके हिसाब से इशू हो गया, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई अपन कंसिडर करेंगे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑन विच सप्लाई रिसीव द पेमेंट। ये वाली लाइन अपन ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर ली। विच एवर इज अर्लियर कंसिडर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकंड, वेयर इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड एज पर द सेक्शन 31, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई अपन कंसिडर करेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑन विच सप्लाई रिसीव द पेमेंट। विच एवर इज अर्लियर कंसिडर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। स्पेशल प्रोविजन फॉर स्मॉल एडवांसेस, वैसे जीएसटी लॉ में कोई भी एडवांस कितने रुपए का भी एडवांस आ जाता है तो अपने को उस पर जीएसटी पे करना होता है, बट जीएसटी लॉ ने कुछ स्मॉल टैक्स पेयर को रिलीफ दे रखी है कि अगर आप इनवॉइस अमाउंट से 1000 और लेस अमाउंट एक्सेस अमाउंट ले लेते हो तो उस पर एट द टाइम ऑफ पेमेंट अपने को जीएसटी पे नहीं करना होगा। वो अपन उस एक्सेस अमाउंट पे जीएसटी पे अपन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस उस टाइम भी पे कर सकते हैं। इफ सप्लायर चाहता है कि मैं इस टाइम भी पे करूँ तो वो कर सकता है। यस भैया। तो इसमें बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन का रेलेवेंस क्या है पहले वो एक बार देखते हैं। सो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, राइट? नाउ देयर कैन बी मल्टीपल सिचुएशंस जब देयर कैन बी अ डिफरेंस कि आपको पेमेंट अपने रिसिपिएंट से पहले मिल गया है या आपने इनवॉइस इशू कर दिया है लेकिन गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं हुई है, राइट? एंड टैक्स लाइबिलिटी जो मेरा है जनरल केसेस में ऑन अ मंथली बेसिस आई हैव टू फाइल अ रिटर्न एंड डिस्चार्ज माय टैक्स लाइबिलिटी, राइट? सो टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस बेसिकली प्रोवाइड यू अ फ्रेमवर्क कि आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो डिस्चार्ज करनी है वो किस डेट को अराइज होगी, राइट? जितने भी प्रोविजन है आई थिंक जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, इन केस ऑफ गुड्स जनरल रूल इज as and when you are removing your goods from the factory, so before removal or at the time of removal you need to issue the invoice, and that will be the time of supply for goods. This is a general rule. There can be exceptions also. For services the general rule is whenever you are providing the services, right, within 30 days you have to issue the invoice, right? So within 30 days of provision of services you have to issue the invoice. In case of continuous supply of services, which is basically जो long term contracts आपकी EPC contracts हो गए या कोई larger contracts हो गए which runs into more than 3 months, right? In that case time of supply आपको determine करनी है as per contract, जो भी आपके contract में mention किया हुआ है. If nothing is mentioned, then as per the payment schedule, that is कब कब आपको payment आएगा, अगर payment schedule भी नहीं है then वहां पे आपको जिस दिन actual payment receive हुआ है उसके हिसाब से invoice issue करना है. अगेन एडवांस के केस में एक अलग से प्रोविजन है. इफ यू आर रिसीविंग एडवांस फॉर गुड्स, राइट, सो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एडवांस देयर इज नो लायबिलिटी फॉर गुड्स, बट इन केस ऑफ सर्विसेज एज एंड व्हेन यू आर रिसीविंग द एडवांस, इररिस्पेक्टिव आपने इनवॉइस इशू किया है या नहीं किया या सर्विस डिलीवर हुई है या नहीं हुई है, you are required to issue the invoice to the extent advance is received. So these are the, I mean, general time of supply provisions. There can be exceptions depending upon the nature of transaction. Let's take example. Customer pay 10,800 एडवांस एंड इनवॉइस इज 10,000. इसमें इनवॉइस अपना 10,000 का है, कस्टमर ने 10,800 पे किया है अपने को, तो 800 रुपये अपने एक्सेस आए हुए हैं. तो इस टाइम को ये 800 रुपये की अपनी टाइम ऑफ सप्लाई एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एडवांस, उस टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगी. इसमें टाइम ऑफ सप्लाई अपन एट द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस भी कर सकते हैं. अगर सप्लायर चाहता है कि मैं टाइम ऑफ सप्लाई इस डेट को डिटरमाइन करना चाहता हूँ जिस दिन मुझे एडवांस रिसीव हुआ, तो वो कर सकता है. क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स. If an invoice is issued within the prescribed period under Section 31 of the Central Goods and Service Tax Act 2017, what will be the time of supply of services? Option A, date of issue of invoice. Option B, date of receipt of payment. Option C, earlier of date of invoice or date of payment. Option D, later of date of invoice or date of payment. Yes, sir. आप सोनी C. repeat again. Yes, sir. Yes, yes, sir. आज C. C. Yes, correct answer is C. Issue of invoice under composition scheme, जैसे मनीष ने डिस्कस किया था
मनीष ने डिस्कस किया था अर्लियर स्लाइड में, कंपोजिशन स्कीम वाले को जो टैक्स पेयर होता है वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करके बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं, और नहीं ये किसी भी परचेस वगैरह पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्जेस एंड गुड्स, जैसे सर ने भी अभी डिस्कस किया है अंडर रिवर्स चार्जेस और गुड्स के बारे में। सेक्शन 10 composition scheme does not override section 9 subsection 3 and section 9 subsection 4 relating to reverse charge mechanism. Therefore, a composition taxpayer is also liable to pay GST on inward supply under RCM. composition taxpayer के ऊपर भी RCM अप्लाई होता है, और उनको भी जीएसटी पे करना होता है आरसीएम पे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर आरसीएम, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट और 30 days after the date of issue of supply invoice, whichever is earlier, considered time of supply of goods. Time of supply under reverse charges for services, date of payment or 60 days after the date of issue of invoice by supplier, whichever is earlier, considered time of supply under reverse charges for services. इन दोनों केस में अगर अपन टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं तो इसमें एक जीएसटी लॉ ने अपने को स्पेशल लाइन दे रखी है, स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। अगर अपन किसी भी कंडीशन में हो और उन दोनों केस में उन चारों केस में अपन टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पाते तो डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई, उसी को अपन टाइम ऑफ सप्लाई ट्रीट कर लेंगे। स्पेशल केस एंड एक्सेप्शन, स्पेशल केस है अगर अपन टाइम ऑफ सप्लाई किसी भी वो फॉलोइंग चार प्रोविजन डिस्कस किए थे उसमें किसी में भी टाइम ऑफ सप्लाई अपन ने डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें if the time of supply cannot be determined under normal provision, then where time of supply due date of filing the return, in other case time of supply date on which GST is paid, applicable for both goods and service। ये goods और service में दोनों में लगेगा। Second, addition in value due to interest late fees penalty. If supplier charge from the recipient extra amount like interest late fees penalty due to non-payment by recipient, in case में time of supply date on which supplier receives such additional amount, जिस टाइम पे एडिशनल अमाउंट सप्लायर रिसीव करेगा उसी टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई होगी, इसमें डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगी। लेट्स टेक एग्जांपल, गुड सप्लाइड ऑन 10 जून, पेमेंट रिसीव डेट विद 500 इंटरेस्ट ऑन 25 जुलाई, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स 10 जून, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर इंटरेस्ट 25 जुलाई, डेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्वेश्चन 2 फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, व्हेन ए सप्लायर चार्ज इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच इंटरेस्ट विल बी, ऑप्शन ए date of invoice, option B date of supply of goods or service, option C date on which supplier receives the interest amount, option D date of agreement. Prince Sharda. Sir, the answer is option C, date on which supplier receives the interest amount. Repeat, Prince. Sir, the answer is option C, date on which supplier receives the interest amount. Yes, option C is correct answer. वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी, अपन ने टाइम ऑफ सप्लाई जो भी कंपोजिशन टैक्स पेड से रिलेटेड वो पूरा डिस्कस कर लिया। अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई में सबसे मेन फैक्टर होता है ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से क्या होगा, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल इंडिपेंडेंट पार्टी सोल कंसिडरेशन। Price actually paid or payable means the consideration exchange between supplier and recipient from the starting point. Independent party, supplier and recipient दोनों independent होने चाहिए एज पर सेक्शन 15 के हिसाब से। Sole consideration होना चाहिए, sole consideration means the entire payment of supply in money, nothing else. Valuation where consideration is not wholly in money, जब consideration wholly in money, entirely in kind, partially in kind, partially in money में आता है तो अपन valuation ऐसे डिसाइड करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे ओपन मार्केट वैल्यू को। ओपन मार्केट वैल्यू मींस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस। लेट्स टेक एग्जांपल, ए न्यू मोबाइल इज सोल्ड फॉर 20,000 प्लस ओल्ड फोन एक्सचेंज while its normal market price is at 24,000. In case value of supply will be 24,000. Second, money paid and monetary value of non-money consideration. If open market value is not available, फर्स्ट प्रेफरेंस अपन ओपन मार्केट वैल्यू को देंगे। अगर उससे अपने टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं हो रहा है तो अपन सेकंड इस वाले मेथड से अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे। मनी पेड एंड वैल्यू ऑफ गुड सर्विस रिसीव्ड इन एक्सचेंज। एग्जांपल, लैपटॉप प्राइस 40,000 एंड प्रिंटर गिवन बाय बायर वर्थ 4,000, वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस 44,000। थर्ड, वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। इन दोनों मेथड से अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं हो रही है
इन दोनों मेथड से अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं हो रही है, तो इन केस में कोई सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू देखेंगे और उसी के हिसाब से अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लेंगे। थर्ड, फोर्थ, अप्लाई रूल। अगर इन तीनों मेथड से भी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं हो रही है तो अपन फोर्थ रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई रूल 30 और 31। दिस रूल विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट स्लाइड इन डिटेल्ड। वैल्यूएशन फॉर रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। Rule 21 subsection 1 related person where supplier and recipient are related, that value must be determined using open market value of such supply. If the same is not available, it shall be value of goods or service of like kind and quality. पहले अपन ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड करेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं होता है तो अपन कोई सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू देख लेंगे, उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड कर लेंगे। फर्दर इन दोनों केसेस में, इन दोनों मेथड से भी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं होती है तो इसमें भी अपन रूल 30 और 31 का यूज करेंगे। देयर आर टू एक्सेप्शन ऑफ अबव प्रोविजन। एक्सेप्शन अंडर जीएसटी, इफ गुड्स आर सप्लाइड फॉर फर्दर रीसेल बाय द रिसिपिएंट, गुड्स सप्लाई किया है रिसिपिएंट को फॉर फर्दर सप्लाई के लिए, तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर। एग्जांपल, हेड ऑफिस सेल्स गुड्स टू ब्रांच सेल्स सेम गुड्स टू कस्टमर 10,000. Supplier can choose value 90% in 10,000. This is a 9,000 is a value of supply. This 90% option is optional. If the recipient is eligible for full input tax credit, the invoice values will be treated as the open market value of such supply. Valuation in case principal and agent. Rule 29. एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल एंड गुड्स, एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स को सेल एंड सर्विसेज को परचेस कर, सर्विसेज को सेल वगैरह करता है। विच टेस्ट, इसमें भी दो मेथड है। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल भी ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड सप्लाइड। अगर इस मेथड से अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं हो रही है तो अल्टरनेटिव मेथड है, सप्लायर में टेक 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रिसिपिएंट टू अनरिलेटेड कस्टमर। इफ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन फॉर अर्लियर मेथड, तो इसमें भी अपन रूल 30 और 31 का यूज लेंगे और उसी के हिसाब से अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। रूल 30, कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन अंडर रूल 30। रूल 30, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10% प्रॉफिट मार्जिन और टोटल वैल्यू। रूल 30 प्रोवाइड ए फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। द वैल्यू इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और एक्वाइजेशन और कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सप्लाई, रीजनेबल प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज 10%। रूल 31 रेसिडुअल मेथड एंड स्पेशल सिचुएशन। ये मेथड जब अप्लाई होगा जब अपने 27 रूल 27, 28, 29, 30 इन चारों मेथड से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिसाइड नहीं होगी तो अपन रूल 31 का यूज कर लेंगे। तो इसमें अपने को की पॉइंट ध्यान में रखने हैं। लास्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन यूज ओनली व्हेन रूल 27, 28, 29, 30 कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू। रीजनेबल मेथड है, अपन जो भी मार्केट में रीजनेबल प्राइस चल रही है उसके हिसाब से अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लेंगे। और कंसिस्टेंसी विद सेक्शन 15, जो सेक्शन 15 है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। उसमें वो उस सेक्शन 50 ये हमें बताता है कि इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, तो उसी को भी ध्यान में रख के अपन रूल 31 अप्लाई कर लेंगे। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, इन केसेस ऑफ सर्विसेज, तो अपन डायरेक्ट रूल 31 में जा सकते हैं, बिना रूल 30 में जाए हुए डायरेक्ट रूल 31 अप्लाई कर सकते इन केसेस ऑफ सर्विसेज। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन सर्टेन केसेस। Second hand goods. When a registered person deal in second hand goods, in case value of supply, purchase price and selling price. Pure agent. Expense incurred by agent on recipient behalf. तो ये एक्सपेंस अपने को रिसिपिएंट से रिम्बर्स होंगे, तो अपन इन एक्सपेंस को अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे। Item included and excluded from value of supply. Included in value. Section 50 subsection 2. Tax, duties, cess, fees, charge lived under any law, excluding GST. किसी भी लॉ के अंदर कुछ भी टैक्स लग रहा है तो सारा वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इंसिडेंशियल एक्सपेंस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकेजिंग, इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, ये ऑल्सो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर होगी। सब्सिडी डायरेक्ट लिंकेड टू प्राइस, जो सब्सिडी अपने को जो डायरेक्ट प्राइस से लिंकेड किसी भी अथॉरिटी ने अपने को दी है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगी। एक्सक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक्सक्लूड फ्रॉम वैल्यू सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। सब्सिडी बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अपने को सब्सिडी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई से अपन लेस करेंगे। डिपॉजिट और रिटर्नेबल पैकेजिंग इफ रिफंडेबल, ये अब अगर ये पैकेजिंग चार्जेस वगैरह ये अपने को अगर रिसिपिएंट से रिफंड होते हैं, रिसिपिएंट रिम्बर्स करता है तो इसको भी अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई से लेस करेंगे। डिस्काउंट अलाउड
और डिस्काउंट अलाउड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। कोई भी डिस्काउंट अपने को मिलता है, डिस्काउंट सप्लाई से पहले और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो वो भी अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई से लेस करेंगे। प्री एग्रीड डिस्काउंट विद प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल, प्री एग्रीड डिस्काउंट विद प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल, ये वाला प्रोविजन अपने को ये बताता है कि किसी भी सप्लायर का रिसिपिएंट के साथ एग्रीमेंट हो रखा है कि तू इतनी कुछ मतलब कुछ कंडीशन वगैरह फुलफिल कर देगा, इतनी सेल वगैरह कर देगा तो मैं तेरे को इतना डिस्काउंट दे दूंगा। पर ये डिस्काउंट जब भी मिलेगा उसके जितना डिस्काउंट उसको दिया है उसके प्रोपोर्शनेट में अगर रिसिपिएंट ने आईटीसी ले रखी है, क्लेम कर रखी है, तो उसको रिवर्स करनी होगी। क्वेश्चन 3 फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, which of the following is excluded from the value of supply under GST? Option A, packing charges. Option B, commission charged by supplier. Option C, discount given before supply and shown in invoice. Option D, interest for delayed payment. नव्या नव्या राठी लैपटॉप से कनेक्ट करना चलो ठीक है मान लेते हैं यहाँ से कोई बता रहा है Yes, option C is correct answer. Place of supply of goods and services. Section 10 place of supply of goods. Section 10 apply to the supply of goods other than imported or exported goods. Section 10 apply उस पे होता है सब goods वगैरह की place of supply decide करने के लिए apply होता है other than imported or exported goods. There are three categories: general provision for standard transaction, specific provision for special case, residual provision for unique situation. General provision movement based determination. अगर supply involving movement of goods, in case place of supply location where movement terminate for delivery to the recipient. Supply not involving movement of goods, location of goods at the time of delivery to the recipient. अगर goods question for online participants under GST, in case of supply involving movement of goods, what will be the place of supply as per Integrated Goods and Service Tax Act 2017? Option A, location of supplier. Option B, location where goods are delivered to the recipient. Option C, location where the goods are manufactured. Option D, location where payment is received. free Correct option is B, location where the goods are delivered to the recipient. Yes, option. ये correct answer is B. क्योंकि उससे सुनने की कोशिश कर रहा है बोल ही तो रहा है Specific provision under section 10. कुछ ये जो प्रोविजन है अंडर सेक्शन 10 ये जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उनसे रिलेटेड ही है, क्योंकि जो भी कंपोजिशन टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम एडॉप्ट करता है वो रेगुलरली एनी ट्रांजेक्शन के अंडर सप्लायर होता है वही एडॉप्ट करता है. बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन, goods delivered to another person on the direction of third party. In case of the place of supply, the principal place of business of third person. Good assemble or install at site. When goods require on site assemble or installation. In case the place of supply location where goods assemble or installation at site. Supply of goods on board conveyance. Include service on aircraft, train or motor vehicle. The place of supply is the location where the goods are taken on board the conveyance for transport. Section 11. Imported and exported goods. Imported goods. The place of supply is the location of importer within India. Imported अगर कुछ भी goods अपन import करते हैं तो place of supply importer की जो भी jurisdiction जहाँ पे भी importer ने GST ले रखा है किसी भी स्टेट में वो place of supply हो जाएगा. Exported goods. Place of supply is the location outside India. Exported goods में place of supply location outside India होगा. Special note for composition dealer. Composition dealer cannot make interstate supply of goods but can imported goods. और कंपोजिशन डीलर कभी भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता बट वो गुड्स इंपोर्ट कर सकता है. और कंपोजिशन डीलर को कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी परचेस वगैरह पे नहीं मिलती है. सेक्शन 12. जनरल रूल फॉर सर्विसेज. सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन. द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन.
The place of supply is the location of recipient of service supplied to unregistered person. अगर किसी भी सर्विसेज की सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे तो अगर उसका एड्रेस अवेलेबल होगा तो लोकेशन ऑफ एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं अवेलेबल होगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वेयर सर्विस परफॉर्म्ड. Section 12 specific situation. Immovable property services. Service related to immovable property including construction, renovation, maintenance have place of supply at the location of property itself. इस केस में जहाँ पे भी प्रॉपर्टी होगी, अपन कुछ भी सर्विसेज देते हैं रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे भी प्रॉपर्टी होगी वो लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी. On premises services, restaurant, catering, grooming, beauty or health service have place of supply with the location where service are actually performed or delivered. कुछ भी प्रीमाइजेस सर्विसेज जैसे होटल, रेस्टोरेंट, हेल्थ सर्विस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस में जहाँ पे भी जिस जगह अपन सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी. गुड्स ट्रांसपोर्टेशन. फॉर रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई इज द रिसिपिएंट लोकेशन. फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन इट्स वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. Section Question 5. As per the provision of Integrated Goods and Service Tax Act 2017, what is the place of supply of goods when transportation of goods is involved? Option A, location of supplier. Option B, location where the goods are delivered. Option C, location of recipient if registered. Otherwise, the place where goods are handed over for transportation. Option D, place where payment for the goods is received. Kanika. Kanika and Gauravi. Yes, correct answer is C. Thank you, guys. So just to add here, I think टाइम ऑफ सप्लाई हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. जो टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली किस पॉइंट पे आपको टैक्स पे करना है. देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज बेसिकली टू डिटरमाइन वेदर द सप्लाई इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट. आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, राइट. सो दोज पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस आर देयर अंडर प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स और आई वुड से प्रोविजंस. एंड उसमें भी जनरल रूल है, प्लस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स फॉर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस. Coming to valuation provisions, so basic valuation provision जो है that is captured under section 15, which simply says your value of supply is transaction value. Now what is transaction value? Let's suppose I am advising a client on a specific topic and I said that I'll charge 1 lakh rupee, right? Now the client is not a related person. Related person as in there is a list of related parties that who all are covered under the definition of related parties under section 15 explanation, right? Now my client is not a related person and I have charged 1 lakh rupees, right? In that case, transaction value is 1 lakh rupees. Since I am not related, so वहां पे tax authorities question नहीं करेगी कि आपने ये value ज्यादा charge करी है, कम charge करी है, right? Now take an example that I am advising a related party, right? In that case, I cannot consider that 1 lakh as a transaction value. What I have to do is I have to go to rule 28 first. रूल 28 में जाना है. वहां पे जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स मुझे वैलिडेट करने हैं वेदर माय फी कोड इज इक्वल टू माय ओपन मार्केट वैल्यू. ओपन मार्केट वैल्यू का एक डेफिनेशन है. सो बेसिकली यू हैव टू जस्टिफाई दैट जो वैल्यू आप चार्ज कर रहे हैं वो आर्म्स लेंथ वैल्यू है, राइट? दैट इज नॉट अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड. वहां पे एक्सेप्शन है रूल 28 में दैट लेट सपोज इफ द रिसिपिएंट टू whom I am charging, I'm billing and I'm charging GST, if he is eligible for 100% credit, then there is an exception that whatever value I am charging on the invoice, that is acceptable. Reason being, मैं 1 लाख का invoice भेज रहा हूँ या मैं 10 लाख का invoice भेज रहा हूँ, the recipient is eligible for 100% credit, right? There is no credit loss. So in that case,
the value is not questioned. So whatever you are charging on the invoice, even if it is to a related party, that will be acceptable, right? रेसिडुअल रूल जो है उससे पहले रूल 30 आता है. रूल 30 से इसकी 27, 28, 29 में अगर आपका वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, then you take the value addition as 10%, right? So if you are not eligible for 27, 28 or 29, whatever it is cost of your manufacturing or cost of your services which you have procured, you take 110% of that cost. So basically they have deemed 10% value addition for you, right? So अगर कुछ नहीं है तो 110% आप चार्ज करके उसको इनवॉइस कर दीजिए. एंड रूल 30 भी अगर एप्लीकेबल नहीं है, आई डोंट हैव एक्सेस टू कॉस्टिंग, राइट, कि मेरा कॉस्ट क्या है, देन आई विल गो टू रूल 31 व्हिच सेज रीजनेबल वैल्यू आपको कंसीडर करना है. सो रीजनेबल वैल्यू इज, आई मीन यू हैव टू जस्टिफाई थ्रू योर डॉक्यूमेंटेशन दैट व्हाटएवर वैल्यू आई हैव चार्ज्ड, it is equal to the transaction value which is there under section 15. So if you are dealing with a related party, applying section 15 is not a option. You have to go to rule 28 by default. If you are not dealing with a related party, then section 15 determines your valuation. Clear है? ठीक है सर, that's all. Yes, next speaker. So good afternoon, everyone. So our next topic is compliance and procedural provisions of composition scheme under GST. So our first topic is reverse charge mechanism on composition taxpayer. So basically, as we know, reverse charge is shifting of liability of paying tax to recipient. So let's discuss impact on composition taxpayer. Since section 10 composition scheme is subject to section 9 subsection 3 and section 9 subsection 4, reverse charge provisions also apply to composition taxpayer. However, as they cannot claim ITC, so tax paid as RCM becomes their additional cost. So basically there are two specific reliefs which are provided for composition taxpayer. So as per notification number 13/2017 central tax rate, a person registered under the composition scheme is excluded from reverse charge liability. Basically, two cases are there. First is security services received from a registered supplier and renting of immovable property from an unregistered person. Now we discuss returns which are required to be filed by a composition taxpayer. So as per Rule 62 of CGST Rules 2017, a person paying tax under section 10, that is composition scheme, must file. So basically there are two types of returns. First is CMP 08, which is a statement for payment of self-assessed tax, which is filed quarterly and due date is 18th of month following the quarter. Second is GSTR 4, which is an annual return, which is filed yearly and due date is 30th June for financial year 2024 and 25 onwards. Filing of returns and compliance under composition scheme. A person opting for composition scheme is not eligible to avail ITC, as we know. Therefore, the liability toward tax or interest under the CGST Act must be discharged through electronic cash ledger. We cannot use electronic credit ledger. Any delay in filing form CMP 08 attracts interest at the rate of 18% per annum for the period of delay as per section 50 subsection 1 of CGST Act. Correct. So there are two things which are required to be included in form GSTR 4. First is invoice-wise details of interstate and intrastate inward supplies received from registered and unregistered person. And second is consolidated details of outward supplies made during the financial year. So in practice, many composition taxpayers tend to file CMP 08 together with GSTR 4 instead of filing it quarterly, which may result in additional interest liability due to late filing. Filing of returns before opting for composition scheme. So these provisions apply to a registered person who opt for the composition scheme under section 10 from the beginning of a financial year. So such person is required to file three types of return. First is Rule 59 GSTR 1 details of outward supplies, Rule 60 GSTR 2A details of inward supplies, and Rule 61 GSTR 3B summary return and tax payment.
These returns must be filed up to 30th November of the succeeding financial year or before filing the annual return of the preceding financial year, whichever is earlier. The taxpayer cannot claim ITC, as we know, on invoices or debit notes relating to the period prior to opting for the composition scheme. Liability to file returns wherein withdrawal is made from the composition scheme. So if a person withdraw from the composition scheme, he has to file same returns as we discussed, but the due date changes. So first for CMP08, due date is 18th of the month following the quarter in which withdrawal occurs. And for GSTR4, it is 30th April following the end of financial year in which withdrawal occurs. Now we will discuss liability to file annual return, that is GSTR 9A. So a registered person opting for composition levy is generally required to file annual return in form GSTR 9A. For financial year 2017-18 and 19-20, filing of GSTR 9A was made optional for taxpayers with turnover up to rupees 2 crore. Wide notification number 47/2019 dated 9th October 2019. For financial year 2020-21 and 23-24, filing of annual return was exempted for taxpayers with turnover up to rupees 2 crore. And now this exemption is granted for financial year 2024-25 also. Now the question for the online participants, which of the following statements regarding returns for composition taxpayer is correct? Option A, CMP08 is filed annually and GSTR4 is filed quarterly. Option B, CMP08 is filed quarterly and GSTR4 filed annually. Option C, both CMP08 and GSTR4 are filed monthly. Yeah, option D, CMP08 is filed annually and GSTR3B is filed quarterly. Sapna. Sapna. Answer is B. CMP08 is filed quarterly and GSTR4 is filed annually. Yes, the answer is correct. So now we will discuss a concept of bill of supply. So as we know, a composition taxpayer cannot collect tax from customers. So he have to issue a bill of supply instead of a tax invoice. So registered person supplying exempted goods or services or both or paying tax under section 10 shall issue instead of a tax invoice a bill of supply containing such particulars and in such manner as may be prescribed. So rule 49 of CGST rules has prescribes some mandatory contents which are required to be included in bill of supply. So first is name, address and GSTIN of supplier, serial number which is allowed maximum 16 characters, date of issue, name, address, GSTIN and UIN of recipient if registered, HSN code of goods or services, description of goods or services, value of supply after discount or abatement, and signature or digital signature of supplier. A point to be noted, as per notification number 74/2018 dated 31st December 2018, signature is not required for electronic bill of supply issued as per Information Technology Act 2000. So now we will discuss HSN code requirement as per notification number 12/2017 dated 28 June 2017. So basically, if the turnover is up to rupees 2 crore, then the HSN digits are 4 digits for B2B and it's for B2C it's optional. And if the turnover is above 5 crore, then the HSN code digit is required to be of 6 digits. Now we will discuss consolidated bill of supply. So in case where all the conditions are met, we will discuss 3 conditions. Consolidated bill of supply in respect of such supplies can be made by the taxable person at the close of each day. So there are 3 conditions. First is if recipient is unregistered. Second, invoice not required by the recipient and value of supplies is less than 200. So if 3 of the conditions met, the supplier can issue a consolidated bill of supply at the close of each day. But it requires composition taxable person not eligible to collect tax on supplies at the top of the bill. GST law prescribes only the content, not the format. Any format may be used if required details are included. Question for the offline participants. A consolidated bill of supply may be issued when recipient is registered and the value is above rupees 200. Recipient is unregistered and value of supplies is below 200.
So option C, recipient demands a tax invoice, and option D, supplies interstate. Answer is correct. Now let's talk about accounts and records which are required to be maintained and retained by a composition taxpayer. So as per section 35 of CGST Act and rule 56 of CGST rules, every person opting for composition scheme must maintain proper records of first, production or manufacture of goods and details of inward and outward supplies, stock of goods and output tax payable and paid, import and reverse charge transactions with relevant documents like invoice, bill of supply, delivery challans, credit debit notes, voucher, e-bills, advance received and paid along with adjustments, details of supplier and recipients, including names and addresses, address of premises where goods are stored, including goods in transit. So these are some documents which are required to be maintained by a composition taxpayer. Additionally, records may be required for agents, manufacturers, service providers, work contractors, transporter where applicable. As per Rule 56, Sub-Rule 2, composition taxpayers are not required to maintain detailed quantitative stock records. So it's a basic relief for composition taxpayer. Maintenance and retention of books of accounts, regulatory requirements. So there are some regulatory requirements which are required to be fulfilled. First is books maintained manually must be serially numbered and electronic records must be digitally authenticated. Books must be kept at principal place of business and additional place of business if applicable. Entries in accounts cannot be erased or overwritten. Correction must be properly recorded. If goods are found stored at an undeclared location without valid documents, they may be treated as supplies made by the taxpayer. Now we will talk about retention of records. So as per section 36, books of accounts and related documents must be retained for 72 months from the due date of filing annual return. For example, a composition dealer files its GSTR 4 annual return for financial year 2023-24 on 30th June 2014, then record must be kept until 30th June 2030, that is 72 months from the filing of annual return. But if the taxpayer is involved in appeal, revision, investigation, court proceedings, records must be retained for 1 year after final disposal of the case or 72 months from the filing of annual return, whichever is later. So there are some consequences of improper accounting. First, if goods or receipts are not properly accounted for, the proper officer may determine the tax liability as if such goods or services were supplied, and recovery proceedings will be initiated under section 73, 74 and 74A of the CGST Act 2017. Question for the online participant. As per section 36 of CGST Act, books of accounts and related records must be retained for option A, 3 years from the end of financial year. Option B, 5 years from the due date of annual return. Option C, 72 months from the due date of furnishing annual return. Or option D, 10 years from the date of registration. Hello. Hello. Hello.
Answer is C, 72 months from the due date of furnishing annual return. Yes, the answer is correct. Now we will talk about withdrawal from composition scheme. So as per section 10 of CGST Act and rule 6 of CGST rules, composition scheme lapses if. So there are two conditions in which composition scheme lapses. First, if aggregate turnover exceeds the threshold limit prescribed under section 10 subsection 1 or section 10 subsection 2A. And second, if taxpayer fails to satisfy conditions of section 10. So as per rule 6 sub rule 2, taxpayer must intimate withdrawal in form GST CMP 04 within 7 days. And from that date, he must pay tax under the normal GST provision, that is section 9, and issue tax invoice instead of bill of supply. A taxpayer may also voluntarily withdraw by filing form GST CMP 04 on the GST portal. Consequences of ineligible persons opting for composition scheme. So as per section 10 subsection 5, if a person wrongfully opts for composition scheme or violates any conditions of section 10, he must pay tax under normal GST provisions and penalty as applicable under the provision of the law. And tax recovery will be determined under section 73, 74 and 74A of the CGST Act. As clarified in the CBIC circular number 7751 2018 GST 31st December 2018, withdrawal becomes effective from the date mentioned in CMP 04, and if tax authorities deny the option, the effective date may be retrospective but not before the date of contravention. Submission of stock details after withdrawal. So after withdrawal or denial of composition scheme, taxpayer must file form GST ITC 01 to claim input tax credit on stock. So this includes details of input held in stock, input is semi-finished or finished goods, and capital goods. Time limit within 30 days of withdrawal or order in CMP 07. If withdrawal relates to one place of business, it will apply to all registration under the same PAN. ITC eligibility after opting out of composition. So as per section 18, subsection 1, clause C of CGST Act and rule 40, when a person shifts from composition scheme to normal scheme, he can claim ITC on input held in stock, input in semi-finished or finished goods or capital goods. The credit can be claimed as on the date immediately preceding the date of shifting to the regular GST scheme. For example, if switching date to regular scheme is 1st July, then he can claim ITC available on stock on 30th June. ITC on capital goods shall be allowed after reducing the tax amount by 5% per quarter from the date of invoice as per rule 40 sub rule 1. The taxpayer must submit a declaration in form GST ITC 01 within 30 days of becoming eligible to claim ITC, specifying details of stock and capital goods. If the ITC claim exceeds rupees 2 lakh, the details in ITC 01 must be certified by a chartered accountant or a cost accountant. The ITC claim will be verified with details furnished by supplier in form GSTR 4. Now the question for the offline participants. When a taxpayer ceases to satisfy conditions of the composition scheme, intimation for withdrawal must be filed in A. Form GST REG 16, B. Form GST CMP 04, C. Form GST ITC 01 or D. Form GST CMP 08. कौन बता रहा है? मंत्री मंत्री The correct answer is B. सही है. B है. हाँ तो B तो बोला. Now we will talk about cancellation of registration in GST. So as per section 29 of CGST Act 2017, there are two ways in which GST registration can be cancelled. First is on application by the registered person or his legal heir, or by the proper officer on his own motion, that is suo motu, under the provision of section 29 of CGST Act 2017. Section 29 of the Central Goods or Service Tax provides the legal authority for cancellation of GST registration when the prescribed conditions or circumstances arises. The cancellation mechanism ensures that inactive, non-compliant,
or ineligible taxpayers do not continue to remain registered under the GST, thereby maintaining the integrity of the tax system. Cancellation of registration on the application by taxpayer or a legal hire. So if registration may be cancelled if business is discontinued, demerged, amalgamated or disposed of, or change in constitution of the business, or taxpayer is no longer liable to be registered under section 22 or 24. As per Finance Act 2020, amended provisions allow to opt out for the registration voluntarily made under sections 3 of section 25. There are some prescribed conditions in which proper officer also cancel GST registration under composition scheme. So first is if no business is conducted from the declared place of business, invoice issued without actual supply of goods or services. Third, bank account details not furnished under Rule 10A. Fourth, composition taxpayer fails to file return for 3 consecutive periods, and for other taxpayers fails to file return for 6 months. Fifth, voluntarily registrant does not start business within 6 months. And last, registration obtained by fraud, misstatement, or suppression of fact. Procedure for cancellation of registration. The cancellation on application by the taxpayer. So अगर application taxpayer ने दी है तो application to be filed in form GST REG 16 and must be filed within 30 days of the occurrence of the event. And if the cancellation is done by proper officer, then he will first issue show cause notice under form GST REG 17. Taxpayer should file a reply in form GST REG 18 within 7 working days, and order will be issued in form GST REG 19 within 30 days. If reply is satisfactory, proceedings may be dropped through form GST REG 20. Consequences of cancellation of registration. So cancellation does not affect liability to pay tax, interest, or penalties. As per section 29 subsection 5, a taxpayer must pay higher of ITC on inputs and capital goods held in stock or output tax payable on such goods. However, composition scheme taxpayers generally do not avail ITC. Therefore, this liability normally does not arise for them. Also, composition taxpayers are not required to file GSTR 10 since they do not claim ITC. Now we will talk about revocation of cancellation of registration. So if registration is cancelled by a proper officer, the taxpayer can apply for revocation. So key points: application to be filed in form GST REG 21 within 30 days of cancellation orders, and all pending returns must be filed in dues paid before applying. Revocation process. First, notice will be issued by officer in form GST REG 23. Taxpayer should reply in form GST REG 24 within 7 days, and order will be passed in form REG 22 if revocation allowed, and in form REG 05 if application rejected. Question for the online participants. At the time of cancellation of GST registration under section 29 subsection 5, a registered person is required to pay an amount equal to option A, output tax payable on stock only, option B, input tax credit on inputs held in stock only, option C, higher of the ITC on inputs and capital goods held in stock or output tax payable on such goods, or option D, lower of ITC on stock or output tax payable. अरे अरे मंगलम. So the correct option is C. Am I audible, sir? Yes, the correct answer is C. So now we will discuss some practical cases that shows how court interprets laws and regulation. So now we will discuss case 1. हार्दिक
So now we will discuss case 1, Edelweiss Rural and Corporate Services Limited versus Deputy Commissioner, Calcutta High Court. So background of the case is the assessee has ceased its operations under GST and GST registration was cancelled. Subsequently, a refund of rupees 68,66,238 was sanctioned pursuant to an appellant order. The refund order contained two contradictory directions. First, Form GST RFD 06 order directed to refund to be credited to the practitioner's bank account. And second, detailed refund order contradicted by directing the refund to the electronic credit ledger. So what is the point of dispute? Whether GST refund sanctioned to an entity with cancelled GST registration and closed business should be credited to the electronic credit ledger or paid to the bank account. So assessee submitted, in the absence of any business, the assessee cannot take benefit of the refund credited to the electronic credit ledger. So what court observed in this case, that once the taxpayer business is closed and registration stands cancelled, crediting refund to the electronic credit ledger becomes meaningless since it cannot be utilized. Administrative orders must consider practical and commercial realities while granting refunds and decisions. The court directed that the refund amount must be remitted directly to the taxpayer's bank account instead of credited into the electronic credit ledger. So what is the key takeaway? A GST refund provisions must be applied in practical and reasonable manner, particularly where the taxpayer registration has been cancelled or business operations have ceased. Now we will discuss second case of Anand Steel versus Union of India and others, Madhya Pradesh High Court. So what happened in this case? The assessee filed GSTR 3B returns for financial year 2028 and 19. Although some returns were filed after the prescribed due date, along with the payment of tax, interest, and late fees, the GST department issued a notice proposing to disallow ITC on the ground that credit was claimed beyond the time limit prescribed under Section 16, subsection 4 of the CGST Act. Subsequently, an order was passed. Naman. Subsequently, an order was passed disallowing ITC and initiating recovery proceedings. So what is the point of dispute? Whether ITC can be denied solely due to delayed filing of GST returns, even when the taxpayer has fulfilled other substantive conditions. Assessee submitted that assessee argued that ITC is a substantive right. Once the conditions under Section 16, subsection 1 and 16, subsection 2 are satisfied, such denial results in double penalization, as the taxpayer is penalized once through the late fees, interest, and again through disallowance of ITC. So court observed that ITC is a substantive statutory right. Once the conditions under Section 16, subsection 2 are satisfied, denying ITC merely due to late filing of returns may amount to double penalization, as we discussed, since taxpayers already pay interest and late fees for such delay. The court also noted the retrospective amendment introduced by Section 16, subsection 5 through the Finance Act 2014, which provided relief for certain past periods. So court gave the decision setting aside the assessment and show cause note orders and directed reconsideration of the matter in the light of amended provisions. Key takeaway: procedural delay in return filing should not automatically deprive taxpayers of substantive ITC benefit, particularly when the law provides retrospective relief. Thank you. That was my. बोल लेना कुछ बोल रहा हो कौन से हमने तो बोल लिया